Okay, so now is that working? I was actually somewhere else, I think. Okay, so let me start with what I was saying. Okay, so yesterday there was a problem raised by Bharat. So I'm first of all resolving that, and then we shall move to the problem that I left you with. Okay, uh, am I audible? That is all fine. Is my voice reachable? How are you? Okay. So yesterday we were having a discussion, like on the very first day, I stated that complex numbers and real numbers form a field structure. So when I say field structure there, I I meant what you can say as I just विजिबल नहीं है भैया. अच्छा screen visibility. Okay, sorry, my bad. Just give me a minute. Actually, this is what happens with the people who are mismanaged. So I work in chaos. So actually, I live in chaos. So today I started the lecture at 8:30. I made a slide which had all the questions and everything was there. And see, I'm starting today at 9:12. So, so with people like us who are like people who love chaos, work in chaos. So more ordered we try to become, more chaos uh, propels. I don't know what is the reason, but that remains to be the truth with my life. Okay, so let us start on the lighter note with the thing that was asked by Bharat. Now I think screen is visible, isn't it? Yes भैया. Okay, so he asked me a question yesterday that, and, to the best of my knowledge, I'm writing. I'm not stating that this is what it is. So I'm writing to the best of my knowledge uh, because I didn't get much time to investigate but what he was interested in, probably because he works in quantum information computation or likely fields. So he asked me a question that whether what you were saying on the very first day, that complex numbers form a field. So does that field and the vector field or the scalar field that we study in physics, mostly in physics, I've not seen mathematics, we don't have such terms, we do have such terms, do have the in mathematics only this terms derives its inspiration no doubt from physics, but in mathematics also uh, we come we frequently encounter these words or these particular terminologies. So he asked me the question that whether this field that we were stating on the very first day regards the algebraic structure of complex numbers has something to do with these terms. Okay, that may be probably a tricky thing to answer, but still, to the best of my knowledge, I'm saying uh, I do believe that field here means an algebraic field. So by algebraic field, what I mean that all those all those properties. If you clearly remember that if I say that if there is a field with respect to addition and multiplication, I would mean that it should form an abelian group with respect to addition, abelian group with respect to multiplication, and also there should be an adherence to the distributive law. Okay, so if at all that remains the case, this is an algebraic field. So what is vector field and scalar field in general? So you can answer in this manner. Let's say if I have a point x comma y, if I can associate a vector to it, see, if I can associate a vector to it. So let's say if I can associate some vx I cap, v by j cap, this forms a vector field. So velocity fluid, velocity vector, velocity field you can say. So here you can say that this forms a velocity field. For example, if I say at a point x comma y, the electric field is given by, so electric field. Are you getting my point? This is not field this way. This is field because for every point in xy, you have a certain magnitude as well as direction. Okay, so for every point, if you can associate a direction, and for every point, you can associate a magnitude of a physical quantity, that is called as a vector field. And to every point in the space, let's say x comma y comma z, if you can associate a scalar, that is only magnitude. So for example, temperature field, for example, pressure field. So these are called as scalar fields. So as far as I understand, these are nothing but these are etymologies. So they've got I can say, well, I mean they are completely unrelated. This is what I want to say. Probably there may be more to it, but I think this is it. This is what I want to say. So probably this is an etymology, nothing else. Okay, so probably their origin may be close, like word wise, but they have got nothing to do
with each other. Okay, so this is the doubt resolution of what he was asking. Now, just give me an answer to this particular problem. Okay, second thing that I have thought is from tomorrow onwards, if you people are supportive, why not keep 3 sessions? So to keep, because otherwise things will not be done. Probably 40 minutes more if you can give to me. So 40 minutes we can have mathematical physics, and in 40 minutes we can run certain topics of physics. Like that will generate some sort of interest also, because sooner or later you are going to lose interest in this particular zone. Because, and secondly, I want to say, please do work over it, all these things, because otherwise if you're not working on all these things, it is not going to materialize anyway. So that is what is my suggestion. I want you people to tell your suggestions also on group, that whether should I take these 40 minutes in physics also, because that will somehow generate a sense of interest also. Otherwise it will become all the more mundane, and you'll start losing interest sooner or later. For me, all these things are very interesting because I love mathematics, but I don't think everybody do so. So that is the case. So let us go ahead with the question that I'm giving you. Just answer me this problem. Does let's say if I'm having a z plane, so I'm defining on z plane x comma y. This is your z plane, and there is a w plane. Let's say we have a w plane. W plane is defined by u x comma y comma b x comma y. Okay. So my question is, under the transformation, fz is equal to z square. Under the transformation fz equal to z square, where the hyperbolas, yeah, you can say where the points on the hyperbola, points on the family of hyperbolas and rectangle hyperbolas. Hyperbolas in z plane gets mapped to. So this is my question. So under the transformation fz equal to z square, where the points on the family of the hyperbolas and the rectangular hyperbolas in the z plane gets mapped to. So what I'm asking is very simple question. I'm asking, let's say if I have, if I have, where is this? Okay. So if I have these two things, let's say if I have this thing, this is my z plane. Okay. This is my z plane. And I'm asking a simple question, that if in z plane I have family of hyperbolas, let's say family of hyperbolas, I can write it in this fashion. Let's say x square minus y square is equal to c1, isn't it? Yes or no? I'm saying under the transformation fz is equal to z square, where all these points will go. Okay. So if at all I'm saying, so under the transformation fz equal to z square, what happens? So fz is equal to z square. So every point on this plane, let's say any point, if you say, any point if you say, it will be equal to what? X is under the transformation fz equal to z square. So what will point behave like? So if I have the point x comma y, under the transformation fz, it will become x square minus y square comma 2xy. And all these family of parabolas are nothing but x square minus y square equal to c1, x square minus y square equal to c1. Yes or no? Are you getting my point? So if I have to write family of lines, so straight lines, how would I do? I would write it as y is equal to mx plus c, isn't it? So you have to write the, if I have to write the family of hyperbolas, I have to write it as x square minus y square equal to c1. Okay, what does it imply? It implies that your u coordinate in the w plane is nothing but it is equal to constant, because see, all of these points adhere to some line, some equation, that is x square minus y square. So any point on the z plane under the transformation fz equal to z square transforms to first x square minus y square comma 2xy. This is it. So under the transformation z square, this will become this.
And if I say that x square minus y square is some constant, what does it imply? It implies that in W plane, the u coordinate will be some constant. Yes or no? If u coordinate is some constant, so will it not be a straight line? It will be a straight line parallel to y axis. Are you getting my point? हाँ या ना? समझ में आई मेरी बात? नहीं समझ में आई? क्या हो गया? सब शांत क्यों हो गए? What happened? किसी को समझ नहीं आया क्या? आया नहीं आया क्या हुआ? आगे? सर मुझे समझ नहीं आया। ओके, कुमुद बोल रही है? नहीं बोल रही, कौन बोल हाँ रही है? सर। कुमुद बोल रही है। ठीक है, देख बेटा देखो, हम लोग फर्स्ट डे पढ़ रहे थे कि लेट्स से कोई भी पॉइंट है ना, लेट्स से कोई भी पॉइंट है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में कोई भी पॉइंट किस टाइप का होगा? एक्स कॉमा वाई टाइप का होगा, मानते हो? एक्स कॉमा वाई मतलब एक्स प्लस आयोटा, एक्स प्लस आयोटा वाई को हम इस तरीके से लिखते हैं। ओके, अगर मैं तुमसे कहूँ एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर करना, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब फंक्शन ही है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो एक्स कॉमा वाई किस पर ट्रांसफॉर्म हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा टू एक्स स्क्वायर। हाँ या ना? नहीं समझ में आया तो देखो ऐसे करो, एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आयोटा एक्स। सो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमा वाई माइनस वाई स्क्वायर को रियल पार्ट हो गया, टू एक्स वाई हो गया इमेजिनरी पार्ट। हाँ या ना? कुमुद कहाँ गई बेटा, बोलो। यस सर। ठीक है, आप खुद सोचो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर मैं फैमिली ऑफ हाइपरबोलास दे रहा हूँ, तो दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा? कुछ कांस्टेंट सी, अलग अलग सी चेंज होते जाएंगे, एक फैमिली ऑफ हाइपरबोलास क्रिएट होती जाएगी। बात समझ रहे हो? यस अलग सर। अलग सी वेरी होगा तो अलग अलग हाइपरबोलास क्रिएट होंगे। मतलब इस जेड प्लेन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर है? C1 के बराबर है। इसका मतलब ये जो डब्ल्यू प्लेन है, इस प्लेन के अंदर, ये डब्ल्यू प्लेन बेटा कौन सा? इमेज प्लेन। ये है तुम्हारा डोमेन ऑफ डेफिनेशन वाला प्लेन, और यहाँ पे क्या बन रही है? इमेजेस बन रही है। तो वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ से कोई पॉइंट पिक करते हो, तो इस पॉइंट की इक्वेशन क्या होगी? एक्स कॉमा वाई की इक्वेशन क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1 होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर C1 है, तो उस कोऑर्डिनेट प्लेन, इस वाले प्लेन में जब ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो यहाँ वाले पॉइंट्स की का यू कोऑर्डिनेट क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वी कोऑर्डिनेट क्या है? टू एक्स वाई। यू और वी समझो डब्ल्यू प्लेन के एक्स और वाई। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर प्लेन के अंदर जो u है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सी दे रखा है, तो इसका मतलब u भी किसका बराबर हो जाएगा? c के बराबर। u c के बराबर है, इसका मतलब क्या है? एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन जाएगी? u यहाँ का x कोऑर्डिनेट है, तो ये समझो अगर x यस इक्वल सर। टू k लिखता तो मैं कैसे लिखता? ऐसे तो लिखता। सिमिलरली कांस्टेंट। कांस्टेंट, तो u इक्वल टू c मतलब इस तरीके की लाइन बन जाएगी। खुद सोचो, x इक्वल टू k ऐसी लाइन बनती है ना, पैरेलल टू y एक्सिस। हाँ या ना? यस ठीक सर। है, सिमिलरली अगर तुम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ले रहे हो यहाँ पे, सो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है? एक्स वाई। तो खुद सोचो, अगर मैं एक्स वाई को कांस्टेंट ले लूं, तो टू एक्स वाई भी कांस्टेंट आएगा। एक्स वाई को कांस्टेंट दोगे तो टू एक्स वाई भी तो कांस्टेंट आएगा। तो लेट्स से टू एक्स वाई सी के बराबर है, तो ये जाके कहाँ मैप होगा? ये जाके मैप हो जाएगा v इक्वल टू C2 पे। क्योंकि खुद ध्यान से देखते हैं तो ये पता लग रहा है कि u के बाद v क्या है? देखो टू एक्स वाई है कि नहीं? तो टू एक्स वाई तुम्हारा v के बराबर है, एक्स वाई किसके बराबर है? C2 के बराबर है। तो v किसके बराबर हो जाएगा? C2/2 नहीं हो जाएगा? सोचो, थोड़ा ध्यान से देखो, ये टू एक्स वाई है, ये क्या कह रहा है? एफ जेड को अगर जेड स्क्वायर लेते हैं तो एक्स कॉमा वाई क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा टू एक्स वाई। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि टू एक्स वाई C2 के बराबर है, व्हाट डज इट इम्प्लाई? इसको C2 लिख सकते हो। इसको जब C2 लिखोगे तो मतलब डब्ल्यू प्लेन के अंदर v C2 के बराबर हो गया, और v अगर C2 के बराबर हो गया तो डब्ल्यू प्लेन में जो y कोऑर्डिनेट है वो C2 के बराबर हो गया। इट इम्प्लाइज इट विल गेट मैप टू लाइन ऑफ दिस सॉर्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऊपर से चली गई बात। ठीक है, यस और नो? सबको समझ में आया? नहीं है सिर्फ ऊपर से चला गया? यस सर। अरे वाह, अल्पना को समझ में आया? कोई बोलता ही नहीं। दीक्षा को समझ में आया बेटा? Yes, sir. चलो बढ़िया। ये यस सर मैंने जो अंदर वाली मुस्कुराहट थी, इससे पता लग रहा है कि नहीं आया, बट एनी हाउ ट्राई टू डू इट। ठीक है, इसको ट्राई करना, करने सोचने की थोड़ा सा। ठीक है, अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, एक क्वेश्चन का जवाब दो। अम, अच्छा, कल एक क्वेश्चन मैंने कल पूछा था, वो कल एक बार कर लेते, इससे कि तुम थोड़ा घबराओ नहीं। अरे घबराना बंद करो, एक तो संडे है, तो संडे के दिन ये मत सोचो कि बच जाना है, नहीं बचना है। इन एनी केस यू हैव टू बी देयर। एक दिन अपन ने फ्लो तोड़ा फिर टूट ही जाएगा, इसलिए मैं नहीं तोड़ता ऐसी चीजें।
ठीक है, सो e की पावर z को क्या लिखोगे, e की पावर x इंटू e की पावर आयोटा का, ये किसके बराबर है, 1 प्लस आयोटा के बराबर, मानते हो हाँ या ना? व्हाट डज इट इम्प्लाई, इट इम्प्लाइज e की पावर x cos y किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, और e की पावर x sin y भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। थोड़ा ध्यान से देखो, 1 प्लस आयोटा क्या होता है, 1 कॉमा 1 ही तो होता है, और ये क्या हो जाएगा, e की पावर x e की पावर आयोटा y कितना होता है, e की पावर x cos y प्लस e की पावर आयोटा e की पावर x sin y, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता, थोड़ा ध्यान से देख के बताओ, e की पावर आयोटा पे लिखो cos y प्लस आयोटा sin y, e की पावर x से मल्टीप्लाई Yes, करो, sir. e की पावर x gets compared to 1, e की पावर x sin y gets compared to 1, so what you will get, you will simply get e की पावर 2x is equal to 2, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो जिससे कि y एलिमिनेट हो जाए। ओके, सो y एलिमिनेट हुआ, x किसके बराबर आ गया, 1/2 ln2, मानते हो? सिंपली स्क्वायर करके ऐड किया है, स्क्वायर देम अप ऐड इन ऑर्डर टू एलिमिनेट y, यस या नो? Yes, sir. Similarly, what you try to do, you have to eliminate x at times. So you have to do e की power x sin y divided by e की power cos y. So you will get 1. So y you will get tan inverse 1. So and tan inverse 1 is equal to pi upon 4. So what you will get in general solution to this is n pi plus pi by 4. If you clearly remember from our standard 11 days. So because tan is a periodic function with a period pi. So this is this is like a particular solution. The most general solution would be of this sort. Yes or no? So in any case, e की power z will become 1 plus iota for how many points? For all these points. For all these points, e की power z will become equals to 1 plus iota. Okay? Yes या no? समझ में आई यहाँ तक बात? किसी को नहीं समझ में आई तो प्लीज पूछ लो, भीमसेन को समझ में आई? भीमसेन बोल नहीं रहे, कहाँ चलेगा गदा लेके यार प्रभु। गोपाल समझ में आई बेटा? यस सर। ठीक है ठीक है। दीक्षा समझ में आई बेटा? Yes, sir. क्या समझ में आया बताओ? अब शांत क्यों हो गई? ई की पावर आयोटा वाई क्या होता है, cos फाइव प्लस आयोटा साइन वाई नहीं होता? सो अगर आप ई की पावर आयोटा वाई को लिखोगे cos फाइव प्लस आयोटा साइन वाई, ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टपल नहीं आएगा, हाँ या ना? ये ऑर्डर पे नहीं आएगा। दीक्षा हाँ ना तो बोल दे भाई, इधर है। Yes, sir. हाँ ठीक है, और उसको किससे कंपेयर करेगी, 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा को 1,1 नहीं लिख सकती? ओके, अब मुझे बता, e की पावर x cos y 1 है, e की पावर x sin y 1 है, अब तुझे अगर y को एलिमिनेट करना है तो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटेजी क्या होगी, स्क्वायर करके ऐड कर दे, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इजंट इट? यस या नो? आ गई? ठीक है, सो व्हाट Yes, यू, sir. okay, so what you will get, you will get simply e की पावर 2x equal to 2 and you will simply get x is equal to 1 by 2 log 2, खत्म। and what you do, you just divide both of them. So in order to get rid of this e की power x, you divide both of them, like e की power x sin y divided by e की power x cos y, you will simply get this kind of solution. I hope this is clear to everyone. Yes या no? फटाफट फटाफट बोलो यार, एक तो नींद से Yes, जागो, sir. है ना, मुंह पे पानी डाल दो Yes, इकट्ठा, sir. मिल रहा होगा पानी आसपास ना, तो मुंह पे खूब सारा पानी डाल दो, ऐसा मत करो यार, ठीक है? Okay, so let us start with another difficult topic. Difficult as in the people who find it difficult. I don't want to say that this is difficult, but indeed people find it difficult, so I'll go with that. Okay, so what you can do is, if I just say, uh, if I just say that here is my Z plane. So this is my Z plane. This is my W plane. So this is my Z plane. This is my W plane. Okay, and if I pick any of these points, let's say x, z is equal to x comma y, and if I consider the transformation e raised to power z, if I consider the transformation e raised to power z, okay, if I consider the transformation e raised to power z, so if I just ask you a simple question, what will be the answer to this particular problem? Just try to give an answer. So what will be the
what will be the image of point, what will be the image of point on the line x equal to c1 in z plane under the transformation fz is equal to e की power z. So what do you think? इसको समझ में भी आ रहा है कि सब ऊपर से उठ के जा रहा है, ये बिल्कुल ही खत्म हो गया? एनीबडी जिस प्लीज ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज पूछ लो यार. आई मीन मैं बहुत बार मेरे बच्चों से भी कहता रहता हूँ, समझा तो नहीं पाऊंगा पर एटलीस्ट मुझे ये तो पता चले कितना समझ में आ रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और दूसरी बात मैं पहले ही कह रहा हूँ, डोंट थिंक कि ये ना नहीं समझ में आएगा. अगर ये मानसिकता बना दोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा, फॉर श्योर है. ठीक है. सेकंड, कभी ये मत सोचो कि एग्जाम में नहीं आ रहा तो नहीं आएगा. ठीक है. गॉड नोज एग्जाम में आ जाएगा, फिर बाद में तुम परेशान होगे, तुम कहोगे यार ये तो पढ़ा ही नहीं था. These are all basic things you should be able to figure it out anyway. So let's say मैं तुम्हें समझा ही देता हूँ. Let's say x equal to c1. जब मैं कह रहा हूँ x equal to c1 तो what do I mean? I mean any line which is parallel to y-axis. पहली चीज तो ये समझ में आती है कि नहीं आती? देखो इस पूरे में x कोऑर्डिनेट तो एक ही है ना. ये लाइन होती है y equal to c1, पर ये लाइन तो क्या हो जाएगी? x equal to c1. हाँ या ना? ये तो पूछो, ये तो जवाब दो. हाँ कोई भैया. किसी एक बंदे को पकड़ना पड़ेगा. दीक्षा कहाँ गई? दीक्षा कहाँ गई? यस सर. हाँ बेटा, तू है ना लीड लेके रखना ना, तू बोलती रहना यस यस. नहीं समझ, तुझे समझ नहीं आएगा तो फिर हम लोग रुकेंगे. ठीक है. अब देख e की पावर z. अच्छा ठीक है, e की पावर z बोल क्या होता है बेटा? e की पावर x प्लस आयोटा y. ये मानती है इस बात को? यस इट सर. इट इम्प्लाइज दिस विल बी इक्वल्स टू e की पावर x इनटू e की पावर आयोटा y. मानती है? ठीक है. अगर मैं कह रहा हूँ यस कि सर. अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ से पॉइंट उठाना है, मतलब कोई भी x, y होगा यहाँ का पॉइंट. हालांकि यहाँ पे तो x c1 के बराबर होगा, पर इन जनरल पहले लिखते हैं. अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर z, पॉइंट कैसा हो जाएगा? e की पावर x प्लस आयोटा y, या फिर ऐसे लिख सकते हो e की पावर x इनटू e की पावर आयोटा y. मानते हो हाँ या ना? इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेन के अंदर जो पॉइंट होगा अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल बिकम व्हाट? विल सिंपली, मतलब यहाँ वाला पॉइंट मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ जो z प्लेन पे जो कोई भी पॉइंट है, सॉरी, z प्लेन में कोई पॉइंट है x, y, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर z will get mapped to what? e की पावर x into cos y, comma sin y. मानते हो? My bad. रुक जाओ. e की पावर x, this is what it will be. Yes or no? यस सर. Yes sir. Okay, so this will be a u, this will be your v. Yes or no? दीक्षा जल्दी बोल Okay. बेटा. हाँ तो ओके ओके. यस सर. ठीक है. तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू व्हाट? e की पावर 2x. मानते हो? थोड़ा ध्यान से देख के बताओ. यस. और अब मैं कह रहा हूं कि if I am saying that in the w in the z plane x is equal to c1, does it not imply that your u square plus v square will be equals to e की पावर 2c1? Yes or no? So shall I not write it as some constant? सर एक बार वापस रिपीट करना ये वाला स्टेप. Okay. देख जस्ट. आप, हाँ हाँ कोई बात नहीं, कर रहा हूँ. z प्लेन पे आपका, मैं क्या कर रहा था, लाइन x equal to c1 के बारे में बात कर रहा था. So if I'm talking in the z plane about the line x equal to c1, that implies every of these x coordinate is nothing but c1. Each of these coordinates is nothing but x equal to c1. Yes or no? यस सर. So if each of these coordinates x is equal to c1, it implies जहां पर भी x है, put here c1. So what you will get? You'll get simply u square plus v square equal to some k. And why should I not write it as some k square? कोई issues इसके अंदर? नो. Okay, किसकी इक्वेशन है ये? किसकी इक्वेशन है? u v सर्कल के. की. वेरी गुड, सर्कल की. ठीक है जी. सो व्हाट डज इट इम्प्लाई? इट इम्प्लाई कि आपका यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन x equal to c1 will transform into a circle. Yes or no?
ठीक है. So each of these points which are on the line x is equal to c1 will transform into a circle here of the radius u square plus b square is equal to radius क्या हो जाएगा e की पावर c1. समझ में आया? So radius of this circle will be equal to what? E की power of c1. So all these points on the line x equal to c1 will transform into a circle whose radius is e की power c. Are you getting the point? Further, also understand that as we go up the line, so for example, if I'm climbing up the line, so what is happening? My y coordinate is increasing. So y coordinate is increasing, yes or no? So if I'm climbing up the line, my y coordinate is increasing. X तो constant है पूरी line पे, तो उस पे तो कोई change नहीं आना. तो y coordinate is increasing, yes or no? Yes, sir. And if you just see कि इस particular circle को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, अगर मैं polar coordinates यूज करूँ तो रो कॉमा फाई. पोलर कोऑर्डिनेट्स में रो कॉमा फाई क्या होता है? रो तो होता है रेडियस, तो रेडियस तो पता चल गया तुमको. फाई क्या हो जाएगा? एंगल. मानते हो? यस या नो? Yes. है ना? एंगल ही तो होता है. अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स इसको एक्सप्रेस करूं तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर e की पावर x, e की पावर y, ऐसा e की पावर x, e की पावर y दे रखा है, इनको डिवाइड करते तो tan फाई नहीं आता. अगर मैं कह रहा हूँ कि पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में x किसका बराबर होता है? x cos फाई. y किसका होता है? रो साइन फाई. फाई यहाँ पे क्या होता है? एंगल. सो अगर तुम y अपॉन x करोगे तो तुम्हें फाई नहीं मिल जाएगा. हाँ या ना? सो tan फाई किसका बराबर हो जाएगा? Yes, sir. tan y के बराबर नहीं हो जाएगा. इट इंप्लाइज फाई किसका बराबर हो जाएगा? y के बराबर. इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन में देखें, जैसे जैसे y बढ़ाओगे वैसे वैसे y नहीं बढ़ेगा. जैसे जैसे y बढ़ाओगे, देखो जैसे जैसे y बढ़ाओगे वैसे वैसे फाई नहीं बढ़ेगा. ध्यान से देखो, जैसे जैसे y बढ़ाओगे वैसे वैसे फाई नहीं बढ़ेगा. एज यू इंक्रीज y, phi will also increase in the similar fashion. And if phi is increasing, that implies if you are going up the line, you are actually moving counterclockwise. Angle बढ़ता जाएगा. As you increase y, your angle will keep on increasing. So if anybody asks in this question that x is equal to c1 will get mapped to this particular circle, point number 1. Second, if y coordinate is increasing, that if you're moving up the line, you will be moving counterclockwise in the circle because your angle will be increasing. And if you're moving down the plane, so your y is going towards negative, so you're moving clockwise. So counterclockwise is increasing phi, clockwise is decreasing phi. Are you getting my point? Yes or no? Yes, sir. अल्पना को समझ में आया? ये तो गायब ही हो गई. भीमसेन को समझ में आया? यस सर. वेरी गुड. दीक्षा को समझ में आया बेटा? दीक्षा को समझ में आ ही रहा है सब कुछ. मोनिका को समझ में आया? हाँ जी भैया. कुमुद को आया? यस सर. मोहित को आया? मोहित बोल नहीं रहा. तो ठीक है, बात समझ में आई. तो इस तरह क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे गए. इफ एट ऑल दे आर गोइंग टू आस्क, तो तुमको इस बार करना है, गलत नहीं करना. ठीक है. कल हम लोग बहुत कुछ कर रहे थे, एंड वन ऑफ दोस थिंग्स वेयर लाइक sin z and cos z and all those things. थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं, and let us do some more functions at first. Okay, so trigonometric functions we've studied yesterday. Zeros of trigonometric functions you've studied yesterday. Okay, and now some insights on some very different other functions. Although I will try to formulate another theory to all these things also, that is called as Riemann-Sheet formulation. But that I would do yet tomorrow. But today, let us divert our attention to something else that is called as multi-valuedness. We are diverting our attention to multi-valued functions. Okay, so what do we mean by multi-valuedness? So I will start by giving a simple example to it at first. This theory is quite rigorous. We are going to take one step ahead and go to the formulation of Riemann sheet also. But right now, I'm giving you a basic formulation of what is multi-valued function. So let's say if I'm saying I am on the point, let's say A.
Okay, I am on the point A, and this point lies on the unit circle. Okay, this point lies on the unit circle. So let's say I am on the point A, and let's say I am on the point A, and let's say this can be written as r comma theta. Any issues? अगर तुम x comma y लिख सकते हो तो r comma theta भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत? This is in polar notation. Yes or no? जी सर. Okay. So let me divert your attention to the function fz is equal to z raised to power half. Let me divert your attention to the function fz is equal to z raised to power half. Now, what can be z? Z can be written as x plus iota y. You can write it in this fashion. You can also write z in the fashion r e की power iota theta. Is it fine? ये याद है नहीं याद है? नहीं समझ में आ रहा हो तो देखो, x को लिखो तुम r cos थीटा, y को लिखो r sin थीटा, r को लो तुम कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा. तो पोलर नोटेशन से हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाता है ये. सो z इज इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा. ठीक है, कोई दिक्कत? So under this transformation fz is equal to z raised to power half, what will be the image of a? So what will be the image of a? So I'm writing what will be the image of a. So image of a will be equals to root over r e की power iota theta. Yes or no? You just have to take root over. So any point given by r comma theta is nothing but I can write it in this fashion. This is my point. And if you are not getting it, just try to take a modulus of it. So modulus will give you r. So if I'm sorry, initially I told you a unit radius. I have taken a general case. So let me take a general case. So mod z equal to r represents a circle of radius r. So this is a circle of radius r. Any point lying on it can be written as r e की power iota theta. If I take fz is equal to z raised to power half, what it will become? So you just take a half over it. So you just take a root over of this particular point. So this will give you root over r e की power iota theta by 2. Yes or no? सब बच्चों को समझ में आया? So simply the image of point at A is nothing but root over r e की power iota theta by 2. Yes or no? सब बच्चों को आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? दीक्षा समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Okay, okay, चलो. Yes, ठीक है. sir. Okay, okay, चलो. अभी let us do a revolution around it. So let us make a single revolution over it. So let us take a single revolution around origin. So let us take a single revolution around origin. So if I take a revolution around origin, that is, I'm doing theta to theta plus 2 pi. So I'm going, let's say this was theta. If I take entire one revolution, so now the theta would become what? Theta plus 2 pi? Yes or no? I am बच्चों जल्दी बताओ. अरे कोई yes Yes, तो no तो बोल दो. ठीक है. So now your r comma theta will be transformed to r comma theta plus 2 pi. Yes or no? Now you're on the same point. Understand my point that you are on the same point, isn't it? See, even after one complete revolution, where you are, you will come back to the same point A, isn't it? So even if you do a single revolution, you will come back to the point A. Yes or no? So if you're coming back to the point, the only difference is in the argument. The argument would become theta plus 2 pi. Yes or no? So argument would become theta plus 2 pi instead of theta. यहाँ तक समझ आई मेरी बात? This is a difficult topic. That is why I'm going quite slow right now. Okay? Yes or no? Okay. So now if I try to find fz at A, what it will become? It will become root over r e की power iota theta plus 2 pi divided by 2. Isn't it? And what I'll get? I'll simply get root over r e की power iota theta by 2 into e की power iota pi. What is e की power iota pi? E की power iota pi is nothing but it is equals to -1. How would you know this? So you simply write e की power pi in notation this. So sin pi is 0, cos pi is -1. So this is -1. If this is -1, what it will become? It will become root over minus root over r e raised to power iota theta pi.
Okay, so what you're finding, to your surprise, you're finding that the point A, initially when I was finding fz is equal to z raised to power half, that is, I was finding the functional value with respect to this function. What I was getting root over r e की power iota theta by 2. After one complete revolution, I'm again on the same point A, and what I'm finding, the image to be equals to minus root over r e की power iota theta by 2. So what is happening? It turns out that the point A has two images, isn't it? Yes, yeah. So if I'm making closed loop around this particular origin, and if I'm revolving around it, what is happening? I'm getting two values. So let's say if I revolve for the third time, let's say if, for the second time, sorry, if I revolve for the second time, what will r will remain r. The argument will change to theta plus 4 pi. After one complete revolution, theta plus 2 pi, another revolution, theta plus 4 pi. And now if I try to find fza, what I'm getting root over r e raised to power iota theta plus 4 pi divided by 2. So what I'll simply get e raised to power iota theta, e raised to power iota 2 pi into root 2. So eventually what is happening? This is 1. So this returns to the same value, the value I started with. So basically I started with root over r e की power iota theta by 2. I end up on the very same point after going twice. In general, I have two different values. Okay. Such functions are called as multi-value functions. These functions are called as multi-value functions. And understand the point, on the very first day I stated that analytic functions are meant to be single valued. So analytic functions cannot be multi-valued. So here is a loss of analyticity due to the multi-valued character of the function. So fz is equal to z raised to power half is a multi-valued function. And how many branches does it have? It has two branches, because it corresponded to two different values on the very same points. It contains two branches. Is that is everybody getting my point or not getting my point? Yes, sir. Okay. Now, see, what you can do, you can make a multi-valued function by what? You can do, you can make a multi-valued function by, you can make a multi-valued function a single valued function. How? By doing some transformation, doing some changes in the system. So what I can do, I can simply remove this particular thing. So let me remove this particular thing. So I'm removing z greater than 0. Sorry, x greater than 0. So I'm removing the positive x-axis. If I remove positive x-axis, now I can go all along, but I cannot cross this axis. I can go all along, but I cannot cross this axis because I have taken this particular axis out of the evaluation. So if I take this axis out of the evaluation, what I get? I can only, the only promisable angles to me is theta is varying from 0 to 2. These are only the angles which are promised to me, not beyond that. I cannot go beyond it. So this is a condition that if I introduce a cut, I cannot cross this cut. Such cut is called as branch cut. Branch cut. And point around which revolution gives you such kind of branches is called as branch point. So I was revolving around origin and I was getting a multi-valuedness of a point. Such points are called as branch point. Such cut is called as branch cut. So if I have taken this out of my domain of evolution, so I cannot go revolving over it. So I cannot cross this thing. This particular branch is called as principal branch, because in this branch, the function is only single valued. Because for function to be multi-valued, I have to cross this, because एक बार इसको cross किया, theta plus 2 pi होगा, तभी तो जब ये इसको cross कर पाओगे, और theta plus 4 pi होगा, तभी तो जब इसको cross कर पाओगे. मैंने इसको हटा ही दिया. So I have actually introduced a branch cut. Point around which I was revolving is called as a branch point. This is also a type of singularity. This we'll discuss later. And this particular branch is called as branch where function is single valued is called as principal branch. For now, understand that z e power 1 by 2 is a multi-valued function. So I'll catch you up in the next session from here on. I'll take your queries as well. So don't worry about it. I know this is a slightly difficult topic, but you'll be able to somehow get to it. Don't worry.
So meet you in the next session.